Hello everyone, we are doing question number 27, July 2025, CSIR नेट एग्जाम। तो एक आपको एक 2x2 रियल मैट्रिक्स दे रखा है और आपको पूछा गया कि इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कौन सा होगा इन चारों में से। एंड कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है मैट्रिक्स के बारे में कि इसकी जो ट्रेस है दैट मीन्स सम ऑफ द आइगन वैल्यूज, दैट मीन्स द सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज ऑल्सो। सो वो है 7 एंड ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर इज 29। ओके, सो इस इंफॉर्मेशन का यूज करके आपको सही आंसर बताना है। सो वी कैन डू दिस। लेट द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स बी लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। 2x2 का मैट्रिक्स है, सो आइगन वैल्यूज लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 ही होंगी। ओके, सो the sum of the we know that the sum of the eigenvalues is always equal to trace of the matrix, so we get lambda 1 plus lambda 2 equal to 7. Now we have a theorem which says that the eigenvalues of a to the power k, where k is any positive integer, are alpha to the power k, where alpha is an eigenvalue of a. ठीक है, so since lambda 1 is an eigenvalue of a, so lambda 1 square will be an eigenvalue of a square. Similarly, lambda 2 square will be an eigenvalue of a square. So trace of a square will be lambda 1 square plus lambda 2 square. So we get this equation. Now equation 1 and equation 2 को हम solve करेंगे lambda 1 and lambda 2 find out करने के लिए। एक बार lambda 1 and lambda 2 निकल गया, then we can find the product lambda 1 into lambda 2, right? और वो product हो जाएगा हमारा determinant, because we know that product of eigenvalues is always equal to determinant. So lambda 1 into lambda 2 find out करना है हमें, वो हम बिना lambda 1 और lambda 2 निकाले भी find out कर सकते हैं। So see, हमें lambda 1 plus lambda 2 दिया है and we also have sum of the square, so we can use this formula. We have lambda 1 plus lambda 2 square is equal to lambda 1 square plus 2 lambda 1 lambda 2 plus lambda 2 square. Okay, so left hand side will be 7 square, that means 49, equal to, and lambda 1 square plus lambda 2 square is 29, so we get 2 lambda 1 lambda 2 plus 29, and from here we get 2 lambda 1 lambda 2 is equal to 49 minus 29, that means 20, and from here we get the value of this lambda 1 lambda 2 is 10. So आप देख सकते हैं बिना lambda 1 और lambda 2 की वैल्यू निकाले ही हमने lambda 1 into lambda 2 की वैल्यू निकाल दिया, जो कि हमारा डिटर्मिनेंट हो जाएगा। So determinant of the matrix A will be 10. So now हमारे पास मैट्रिक्स A के बारे में ये पता है कि मैट्रिक्स A की ट्रेस 7 है and determinant 10 है। So the characteristic polynomial will be x square or whatever, t से डिनोट किया इन्होंने वेरिएबल को, so t square minus trace of A plus into t plus determinant of A. Okay, so this becomes t square minus trace of A was 7, t plus 10. So the correct answer is 4th. Thank you very much.